So good morning to all of you, and let's just start with the today's lecture, the first lecture of BSc semester 3. So dear students, we are discussing here the part of BSc semester 3 paper 1 having the name Angiosperm Systematics, Embryology and Indoor Gardening. So dear students, as per your new syllabus, means your batch is following the new topics each year and during each semester. As like semester first and semester two, you are also in the semester three having the new topics. That is a part of applied topics. Applied topics which consist of the unit number 4, that is a skill development, the part of skill development which involve landscaping and indoor gardening. As like we have discussed the part of mushroom cultivation in the semester 1, and also in the part of semester 2 also having the new topics, that is a floriculture. Similarly, the floriculture and the mushroom cultivation, this unit 3 also having the applied part, that is part of skill development. Now if we go through the syllabus of the BSc semester 3 paper 1, which having the name Angiosperm Systematics, Embryology and Indoor Gardening. In this, it consists of total 4 units. Unit 1, which is the part of systemic botany. Unit 2 consists of angiosperm, that is the classification and families. And Unit 3, which consists of the embryology part. Unit 4 consists of skill development, that is the landscaping and indoor gardening. Out of these 4 units, 2 units are allotted to me, unit number 3 and unit number 4. Unit number 3, which is the part of embryology, and unit number 4, it is the part of skill development, that is the landscaping and the indoor gardening. Unit 3 and 4 is allotted to me, and today we are going to start with the unit number 3, that is the part of embryology. In this embryology, we have to study the part of pollination. ठीक है, ये जो embryology का यूनिट है, यूनिट नंबर 3, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, यहाँ पे टॉपिक्स कौन से दिए हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे. So let's just discuss the topics which are involved in the embryology. The first topic is the pollination. Pollination, that is the types and significance. In this pollination, we will discuss the types and significance, types of pollination and the significance of pollination. Second topic related with the anther, which is the part of male gamete in case of the flowering plants. In this anther, we will discuss the TS of anther, then microsporogenesis, then structure of pollen grains, and then development of gametophyte. So gametophyte, that is the male gametophyte, we will discuss in this anther. Later on, next part of this unit 3, that is the ovule, which is related with the female reproductive structure in case of the flowering plants. In this ovule, we will discuss the types of ovule. Then the structure of anatropous ovule we will discuss. Then megasporogenesis, which is the development of female gametophyte, and the development of female gametophyte, that is the polygonum type. Next topic, that is a fertilization, means after the discussing the structure of male gametophyte and the female gametophyte, we will discuss the fertilization portion. In this fertilization portion, we will discuss the double fertilization, which is a famous method of fertilization in case of the flowering plants, especially the angiosperms. And the triple fusion, ठीक है, double fertilization और triple fusion हम लोग वहाँ पे देखेंगे. Then endosperm and its type, and the structure of dicot embryo, that is the onagrade type of embryo, and monocot embryo. So all these content we will discuss in this unit number 3, and later on we will switch over to the unit number 4, which is the part of skill development, landscaping and indoor gardening. In this landscaping and indoor gardening, popular house plants, foliage plants, we will discuss. So let's just start with the first unit of your unit semester 3, unit 3. ठीक है, semester 3 का unit 3 हम लोग देखेंगे अभी, which is the part of embryology. So first topic of this unit 3, that is a pollination. ठीक है, चलिए हम लोग pollination से start करते हैं अभी यहाँ पे.
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय द पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे यहाँ पे। लेटर ऑन वी विल गो फॉर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं वो देखेंगे। And next to the types of pollination, we will go through the significance of pollination. Now let's just talk about this pollination. Pollen grains being non-motile. Pollen grains जो होते हैं वो non-motile होते हैं. They cannot move from one place to another place. So pollen grains being non-motile, angiosperms have evolved the strategy to use abiotic agents, that is the wind and water, and abiotic agents like birds, insects, and snails to their flowers, feeding the visitors and exploiting their mobility for pollination and also seed dispersal. ठीक है, तो इनका कहना ऐसे है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो तो नॉन मोटाइल होते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में अगर हम लोग पोलन ग्रेन्स देखते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कुछ एजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। और बेसिकली पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। ठीक है, उसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, ये सब लोगों को पता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम anther to the stigma of flower is called as the pollination. Now this pollination can be done with the help of some agents which are divided into the two main categories, that is abiotic agents and the biotic agents. Abiotic agents like the wind and water, and biotic agents like the birds, insects and the snail. ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो दो एजेंट्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, pollen grains are non-motile and they are usually carried from flower to flower by means of external agents. पोलन ग्रेन्स अभी ये बार बार बता रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, राइट। दे कैन नॉट मूव बाय सेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, वो खुद होके एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते हैं। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाने के लिए कुछ एजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड एज द एक्सटर्नल एजेंट्स और पॉपुलरली नोन एज द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। Pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of flower. ये तो हमें पहले से ही पता है, बहुत पहले से, मतलब आई थिंक 8-9 स्टैंडर्ड से हमें पता है कि वहाँ पे टॉपिक रहता है कि पॉलिनेशन मतलब द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर is called as the pollination. It is the prerequisite for the fertilization because both the male and female gametes are non-motile. ये एक फिक्स प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म होती है, ठीक है, कि जिसमें फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहली स्टेप आती है, ऐसे इन्होंने बताया, बिकॉज बोथ द मेल एंड फीमेल गमेट्स आर नॉन मोटाइल। मोरओवर द गमेट्स आर प्रोड्यूस एट टू डिफरेंट साइट्स। ठीक है, गमेट्स जो होते हैं वो दो अलग अलग जगहों पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, so this is all about the introduction. Now let's just talk about the types of pollination. ठीक है, pollination के types के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। Self pollination is the type of pollination which is occurs in a single flower or the two flowers on a single plant. ठीक है, तो मेनली अगर देखा जाए तो पॉलिनेशन के दो मेन टाइप होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के केस में अगर हम लोग देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन which is occurs in the single flower or the two flowers on the single plant. ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो सेम प्लांट पे होता है और एक ही प्लांट पे रहने वाले जो फ्लावर्स रहेंगे, एक तो सेम फ्लावर में होगा या फिर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे कि जो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट रहेंगे, तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग और सेल्फिंग। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या होगा वहां पे, इनब्रीडिंग और सेल्फिंग। ठीक है, the inbreeding or selfing is carried out in case of the self pollination. In contrast,
क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, इसके अपोजिट, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके अपोजिट, सेल्फ पॉलिनेशन के अपोजिट अगर देखा जाए तो वहां पे प्रेजेंट होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेल्फ पॉलिनेशन के अपोजिट जो मैकेनिज्म काम करती है दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। So in contrast, the cross pollination is the transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower of different plants of the same species। ठीक है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, so this type of pollination is called as a cross pollination। Pollination can be further divided into the three types on the basis of source of pollination। ठीक है, मतलब पॉलिनेशन जो है वो फिर से उन्होंने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है यहाँ पे। सबसे पहला टाइप दिया है ऑटोगैमी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, देन सेकंड टाइप इज देयर व्हिच इज द पार्ट ऑफ जीटोनोगैमी। ठीक है, मींस नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू द ऑटोगैमी इज जीटोनोगैमी, and the third one that is the xenogamy or the cross pollination, that is a part of outbreeding। ठीक है, so we'll just discuss all these topics one by one। ठीक है, हम लोग one by one देखेंगे कि what is mean by the autogamy and then what is mean by the getonogamy and what is mean by the xenogamy। ठीक है, so let's just talk about the first one, that is autogamy। Autogamy it is also called as the self pollination। ठीक है, तो ऑटोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बाइसेक्सुअल फ्लावर्स is pollinated by its own pollen grains। ठीक है, ऑटोगैमी एक ऐसी प्रोसेस है कि जहाँ पे क्या होता है दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन्स। ठीक है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब कैसे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो सेम फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में मतलब पोलन ग्रेन जो रहेंगे और जो स्टिग्मा रहेंगे एक ही प्लांट में रहेंगे। So it is a type of pollination in which bisexual flowers is pollinated by its own pollen grains। Offsprings are genetically identical to their parent, for example pea plant। ठीक है, तो ऑटोगमी के एग्जांपल दिया है पी प्लांट, एक ग्रुप बॉक्स दिया है यहाँ पे ऑलवेज रिमेम्बर करके। Flowers which use autogamy consist of several adaptations in the structure of flowers to facilitate this process। ठीक है, फ्लावर जो होते हैं जो ऑटोगेमी फॉलो करते हैं उनमें बहुत सारे एडेप्टेशंस आते हैं। It occurs without external pollinating agents। When flowers opens to expose its sex organs, it is called as a chasmogamous flowers। ठीक है, जब फ्लावर ओपन हो जाते हैं to expose its sex organ, that is the pollen grains and the stigma, this condition is called chasmogamous। Um, the contrivances means the condition that leads to the favor self-pollination are bisexuality, homogamy and cleistogamy। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करने वाली कंडीशंस कुछ होती है कि जो उनमें से उन्होंने पहली बताई है बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा होमोगैमी, तीसरा क्लिस्टोगैमी। होमोगैमी देखते हैं क्या होता है, तो when anther and stigma of flower becomes mature at the same time, it is called as a homogamy। अगर एंथर और स्टिग्मा एक सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं तो उसे होमोगैमी कहा जाता है। सम फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर ओपनिंग द फ्लावर। ठीक है, कुछ फ्लावर जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड एज ए क्लिस्टोगैमी। ठीक है, मतलब कुछ फ्लावर जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाते हैं फ्लावर ओपन होने के पहले ही। ठीक है, मतलब
फ्लावर ओपन होने के पहले अंदर के अंदर ही वहां पे पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन को क्लिस्टोगैमी कहा जाता है। अंडरग्राउंड फ्लावर्स इन द सम प्लांट्स which exhibit the क्लिस्टोगैमी are never open। ठीक है, कुछ अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं कि जो क्लिस्टोगैमी शो करते हैं और वो कभी भी ओपन नहीं होते। फॉर एग्जांपल कॉमेलिना बेंगालेंसिस। ठीक है, कॉमेलिना बेंगालेंसिस का एग्जांपल दिया है। देन द प्लांट लाइक वायोला, देन कॉमेलिना कैन प्रोड्यूस बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली कैटेगरी देखी है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पॉलिनेशन, that is a part of autogamy, means it is totally related to self pollination. Getonogamy and xenogamy we will discuss in the next lecture। ठीक है, so let's just go through the revision। हम लोगों ने आज अभी क्या क्या देखा है वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। we have started the semester 3। ठीक है, सेमेस्टर 3 पेपर 1, उसका नाम है एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी एंड इंडोर गार्डनिंग। इनमें से यहाँ पे टोटल 4 यूनिट दिए हैं। इनमें से यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यूनिट नंबर 3 एम्ब्रियोलॉजी का हिस्सा है और यूनिट नंबर 4 स्किल डेवलपमेंट का हिस्सा है, विच इज द पार्ट ऑफ लैंडस्केपिंग एंड इंडोर गार्डनिंग। हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट किया है, दैट इज द एम्ब्रियोलॉजी। इन दिस वी हैव स्टार्टेड पॉलिनेशन टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हम लोगों ने पॉलिनेशन क्या होता है वो देखा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। एंड लेटर ऑन वी हैव स्टार्टेड द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में सिर्फ हम लोगों ने पहला ही देखा है, ऑटोगैमिक। ठीक है, एंड रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। You have to go in your WhatsApp group of semester 3 and write down there your name as a part of your attendance। So I think we have to stop here। Remaining portion we will discuss in the next lecture। तब तक के लिए सब लोगों को stay home, stay safe। सब लोगों को